गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? इट्स बीन सो मैनी डेज we've met due to some personal reasons and family functions and all those things. And since exam is on the head right now, so जितनी भी हमारे बैचेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, दैन मेरी पर्सनल स्टडीज़, सो टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाया. बट एनी हाउ, रिसर्च वॉज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ इंडीड एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एंड काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी इसमें ज़्यादा है, स्पेशली स्टार्ट्स को लेके, रिसर्च मेथोलॉजी को लेके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेके. सो आई थॉट कि ये सेशन को हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं एंड देन सब्सिक्वेंटली वील ऐड मोर सेशंस टू दिस थिंग. क्लियर? चलिए, so without wasting any further time we can start with today's topic, that is research methodology. Research methodology में आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है. फर्स्ट थिंग, you don't have to read or study the whole book, right? You have to focus by analyzing the past year papers, that which key dimensions or which are the key topics which NTA asked. So it is basically hypothesis testing, then it is psychological testing, which is mentioned in your syllabus, which deals with every kind of testing, test development, then the characteristics of test, that is reliability, validity, norms, then the NPC, right? Then the parametric, non-parametric analysis, their test, correlations, types of central tendencies, types of deviations. तो ये बहुत एक होलिस्टिक टॉपिक आपका जाता है, राइट? सैम्पलिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो यू हैव टू check and you have to study only those topics which are important for the exam. Quite a few I have named it. ऐप पे क्लासेस नहीं दिख रही हैं ये वाली? सर ऐप में नहीं चल रहा है क्या? नहीं, ऐप में नहीं चल रहा है, ये यूट्यूब के लिए. आपकी क्लास तो 3:30 बजे से है ना. लाइक फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन द पार्ट हु आर लाइक पार्ट ऑफ विजेता बैच, आपकी क्लासेस 3:30 बजे से हैं. दस फॉर द यूट्यूब सेशन, ठीक है? तो ये क्लास पे नहीं रहेगा. क्लियर? दस फॉर द यूट्यूब. ये आपका क्लास में जो ऐप में सेशंस चलेंगे, टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस, विल बी हैविंग द क्वेश्चंस, एंड आफ्टर इट्स हमारा शाम को एक सेशन होगा जिसमें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर सारे MCQs कवर करने वाले हैं, राइट? सो वो आपके ऐप में चलेगी. दिस इज फॉर द यूट्यूब. क्लियर? चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? So qualitative research and quantitative research, there are two types of research. Quantitative research basically deals with numbers, है ना? जैसे टी टेस्ट हो गया और एनी काइंड ऑफ अनोवा, एनीथिंग विच हैज नंबर इन इट, दैट इज क्वांटिटेटिव. एंड इफ द डेटा इज डीलिंग विद, यू कैन से, द वर्ड्स, sentences, experiences, then that will be known as qualitative data. Clear? So which of the following is a characteristic of qualitative research? What is the answer? बताइए. I think I've already cleared the answer. Correct. It is option number B, which focuses on words and their meanings, right? Interview is the best example of qualitative research. Interview is the best example. Then, in a cross-sectional study, data is collected. So you have another three types of designs, which is cross-sectional study, that is longitudinal study, and another one is basically sequential, right? So cross-sectional is basically when you take data from multiple sources but at the same point. Longitudinal means when you take data from one single source but for the long time, and sequential means mix of both. Clear? So in cross-sectional, data is calculated in the form of, क्या होगा? Correct, from the multiple cohorts at one point. This cohort word is like very difficult, है ना? बहुत confusion create करता है कि cohort क्या होता है. See, cohort is a group of people who share some similar background, who have some similar experiences, and there is a chance that those similar experiences will affect your test results. So we need to identify while we are doing any research that if there is a presence of cohort in our group or not. ठीक है? तो cohort is a group of people who have some similar experiences and similar backgrounds. Then question number 3. Which of the following is true for experimental research? So experiment, as you know, that the sole keyword to identify if anything is experiment or not, that is the presence of cause and effect relationship, है ना? Experiment cause and effect relationship के लिए सबसे important चीज़ होती है. Clear? So which of the following is true for the experimental research? क्या होगा?
ओके, F is saying 3 का A. All right. Anyone else? बताइए. Correct. The correct answer is it is B. It involves random assignment. Experimental research में randomization is the key point. तो manipulation of variables तो होता ही है. You can manipulate independent variables and you can measure dependent variables. तो manipulation तो होगा ही होगा variables का, right? Control group भी होगा उसमें, है ना. तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स की बहुत सारी की सिम्टम्स होती हैं. डी नहीं होगा. एक्सपेरिमेंट विल ऑलवेज यूज रैंडम सैम्पल. रैंडमाइजेशन इज द कीवर्ड. कॉज एंड इफेक्ट इज द कीवर्ड. कंट्रोल ग्रुप इज द कीवर्ड. ये सब 3-4 कीवर्ड्स हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट ग्रुप को बनाते हैं. देन अ रिसर्च इज कंडक्टिंग अ सर्वे यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर. what type of research design is being used? So structured questionnaire use हो रहा है research में. So what do you think? See, the confusion is ना, there are so many types of research design है ना. Qualitative, quantitative, descriptive, inferential, parametrics, non-parametrics, है ना. समझ ही नहीं आता है कि कितने types के types हैं, right? You have so many types out of those types of researches. So this is like confusing topic. अच्छा, कोई बात नहीं. रैंडम असाइनमेंट क्या होता है? रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है बेसिकली व्हेन यू परफॉर्म अ सैम्पलिंग टेक्निक in which every person has an equal chance to be picked up as a sample. This is randomization technique. So you have so many techniques of randomization, which is probability sampling, non-probability sampling, and those students who are part of Vijeta batch and जो भी मेरे foundation batch में थे, I've cleared this topic in a detailed form, जिसमें types of आपकी probability sampling, types of non-probability samplings हैं. And when we'll be dealing the MCQs in the Vijeta batch, वहाँ पे हम लोग almost 50+ questions सिर्फ sampling में ही करेंगे, right? So you must have seen कि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन सैम्पलिंग पे आते हैं and they are definition basis. But the point is there are some keywords जो definitions में confuse कर देता है, right? You will be confused between quota sampling and stratified sampling, है ना. You will be definitely confused between stratified sampling and cluster sampling. Like so इस पे we gonna solve so many MCQs so that कि कोई भी ऐसा डायमेंशन छूटे ही ना जिससे क्वेश्चंस आए और you will be not able to do it. ये होगा ही नहीं आपके साथ. Clear? So अगर आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर को यूज कर रहे हो, दैट इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, राइट. सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजाइंस, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल. व्हेन यू जस्ट डिस्क्राइब द डेटा, है ना, इसका मीन ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है. इमेजिन यू आर डिस्क्राइबिंग योर फ्रेंड, राइट. सो हाउ यू डिस्क्राइब हिम? ही इज टॉल, हैंडसम, है ना, इंटेलिजेंट. यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग, यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन्स. So when you just describe the data, it is descriptive research. Clear? When you actually draw some conclusions, draw some inferences out of the data, that is known as inferential statistics or inferential research method. Clear? So this is option number B. Then what is the main aim of longitudinal study? So longitudinal study, I've told you, a type of study in which single source डेटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए आप डेटा ले रहे होते हो. सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? क्या होगा इसका आंसर? बताइए भाई. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल द आंसर? करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर सी, टू ट्रैक चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना. टू ट्रैक चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. लंबे टाइम के लिए आप लोग क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, यू कैन जस्ट ट्रैक इट डाउन, यू कैन जस्ट मेजर इट. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट. देन in a double blind experimental study, which group is unaware of treatment they are receiving? This is a very important question. This year only, 2024, exactly this was the question. There were example of video game, है ना, कि there are 4 people A B C D, they are playing video game, one is not playing the video game, identify the control group, है ना. Again, if you know the basic concepts, these questions will be cake for you. लेकिन अगर basics ही नहीं पता है, right, तो अगर 90 मिनट्स के अलावा आपको 90 आर भी दे दी जाए तो ये टॉपिक नहीं याद हो पाएगा. बिकॉज इन MCQ you have to understand either you will know answer or you will don't know the answer. There is no mid ground कि मुझे आ रहा है, ऐसा नहीं होता है. MCQ में या तो आपको आंसर पता होता है या तो नहीं होता है. There is no subjectivity. You have to think, generate some thoughts, then you have to write. There is no subjectivity. Objectivity means
either you know the answer or you don't know, है ना. तो बहुत quick question solve होते हैं. Clear? So which group is unaware of the treatment they are receiving? Double blind experiment में. Only the participant? No. It is option number B. Both participant and the researcher. Double blind study हो रही है, right? So no one actually knows what they are receiving, or no one knows actually what they are giving as a researcher. किसी को नहीं पता होता है. Then, which of the following is an example of non-probability sampling technique? As I've mentioned in the classes कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. They will ask you which of the following is not a part, है ना. नॉट करके बहुत क्वेश्चंस आते हैं. बताइए क्या होगा इसका आंसर. Tell me, answer me. What is the okay? Correct. It is C. Convenience sampling. Because इसका दूसरा नाम क्या होता है? Purposive sampling, accidental sampling, haphazard sampling. बहुत सारे नाम होते हैं इसके. Clear? So convenience sampling is basically when you take out the people in the sample just based on your convenience, just based on your purpose. Right? This is convenience sampling. Clear? And don't worry, these questions along with I think 350 plus questions हम लोग अपने विजेता बैच में लेने वाले हैं, which will be solely based on statistics and research only. Because on YouTube we have limitations कि हम बहुत टाइम नहीं डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें अपने दूसरे टाइम्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सो यूट्यूब वी जस्ट ट्राई टू कीप मेंटेनिंग अ फ्लो कि हाँ रोज़ के रोज़ आपके सर्टेन डेज पे आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए. बट इन आवर बैचेस वी टेक द कंप्लीट एनालिसिस एंड विल बी सॉल्विंग लाइक सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 3 टॉपिक्स ओनली. क्लियर? चल, which research design is most appropriate for the establishing cause and effect relationship? अभी 5 मिनट पहले आपको बताया था ये चीज़. Cause and effect relationship, if there is anything written like this, it will be 1000% what? Experimental design. Clear? The only difference between experimental design and correlational design is correlation does not talks about cause and effect. It will only talk about what? The relationship between the two variables. Experiment will say the cause and effect. A is causing B to change. This is experimental design. But if A is changing and B is changing at the same time, this is correlation. कोई भी तरह का cause and effect नहीं होता है. So इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, experimental design. Clear? Very good. Yeah. Which type of validity refers to whether the result of an experiment can be generalized to other situations or group? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. क्या होगा इसका आंसर? इट इज़ अ गुड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. लेट्स सी यू कैन आंसर इट. Correct. It is B, external validity. So external validity basically means how much your test is valid on the different situations, different groups. Because you have developed a test measuring IQ. So you will not be measuring IQ only on the sample you took while you were developing the exam, है ना? You have to make sure your test is applicable to the vast number of group of people. So this is basically external validity. Clear? There's the internal validity means basically your test items are actually valid and truth they are correct in terms of what they are measuring, in terms of what concept they are measuring. This is internal validity. Then, which of the following is an example of qualitative data collection method? Qualitative data collection method का क्या example है? बताइए. Correct. It is interviews. So interviews are of two types, structured and unstructured. Structured मतलब जहाँ पे आप एक set of questions, एक set design rule के according पूछते हो, order के according. Unstructured means you go with the flow, है ना? आपका कुछ ऐसा fixed order नहीं होता है. This is interview. Then, which of the following feature of true experiment? So true experiment का feature क्या है? बताइए. Again, it is an important question. क्या होगा इसका आंसर भाई? बताइए. Correct. It is independent variable is manipulated. Always remember this thing that IV is always manipulated. If there is anything written like that, it is correct. IV हमेशा manipulate होता है. मतलब you can change the values or you can change the levels of independent variable. DV हमेशा measure होता है. ठीक है? You know experiment में control group is required. Option 1 is not correct. Clear? चलो, this is option number B. Then, in a
क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, what differentiate it from a true experimental design? So क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या डिफरेंस होता है, बताओ. Again, it is a good question. Let's see who can answer this. Correct. Some people are giving the correct answer. That is what? Jaldi. Yes, it is C. Lack of control group. So experimental में आपका random assignment होता है, right? Experiment में आपका manipulation of the IV होता है. Experiment आपका qualitative data भी use करता है कभी कभी, clear? But जो control group होता है वो एक्सपेरिमेंटल में होता है. इट डज नॉट लैक कंट्रोल ग्रुप, इट हैज़ कंट्रोल ग्रुप. सो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल से इसी बेसिस पे डिफर करता है कि एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ग्रुप होता है एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है. सो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू चेक कॉज एंड इफेक्ट बट यू कैन नॉट कंट्रोल द वेरिएबल्स इन द लैब सेटिंग. You cannot manipulate the IV as in the case of experimental, but you want to check cause and effect. So in that situation we use quasi-experimental design. Clear? Okay. What is the primary focus of case study research design? Case study का primary focus क्या होता है, बताइए. Case study का primary focus क्या होता है? Correct. आंसर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए. आई एम रीडिंग द कमेंट्स. मुझे नज़रें इधर मेरी जा रही हैं, मैं यूट्यूब भी खोला हुआ हूँ. आई एम रीडिंग द कमेंट्स. सो केस स्टडी का क्या होता है? इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ स्पेसिफिक केस. सो केस स्टडी में आप लोग किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को लेते हो एंड यू आस्क हिम डिटेल्ड क्वेश्चंस, मे बी 1-2-3 आवर ऑफ इंटरव्यू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू परफॉर्म अ रिसर्च डिज़ाइन. इट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन. क्लियर? ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है आपका. देन व्हाट डज सैम्पलिंग बायस मीन्स? सैम्पलिंग बायस का मतलब क्या होता है रिसर्च में? एनी आइडिया? So sampling bias basically means that you commit some error while you are sampling, है ना? So sampling means the process of taking out the sample from a population, and sample is a representative part of the population, correct? So what if you encounter some problem? What if you committed some mistake, some error? So that thing is known as sampling bias. Clear? So it is basically a systematic error due to non-random selection. सैम्पलिंग में जब एक एरर हो जाती है, दिस इज नोन एज व्हाट? योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बायस. क्लियर? दैट इज ऑप्शन नंबर डी. देन व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? क्या डिफरेंस होता है बताइए? क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या डिफरेंस होता है? 12 का बी भी तो हो सकता है. एक सेकेंड भाई, देखते हैं. मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो क्वाजी में कहाँ होता है? क्वाजी में मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, राइट? डिफरेंस पूछना. व्हाट डिफरेंशिएट इट्स फ्रॉम द टू एक्सपेरिमेंट डिजाइन? टू एक्सपेरिमेंट डिजाइन में रैंडम असाइनमेंट होता है, राइट? मैनिपुलेशन ऑफ आईवी होता है. यूज ऑफ क्वालिटेटिव समटाइम्स इट हैपेंस, बट लैक ऑफ कंट्रोल ग्रुप ये नहीं होता है. एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप होता है. क्लियर? चलो. सो 15. What is the key difference between cross-sectional study and longitudinal study? बताइए क्या होगा इसका आंसर? Okay, cross-sectional studies are conducted at a single point in time, while longitudinal studies track the changes over time. Now you know कि cross-sectional और longitudinal क्या होता है, right? चलो. Which of the following is an example of non-experimental design? अच्छा क्वेश्चन है. Non-experimental design का example क्या होगा? बताइए. What will be the example of non-experimental design? Correct. It is, some are saying correct. It is basically what? Observational study. Observational आपकी is a kind of qualitative. ये experimental में exactly नहीं आती है, ये non-experimental में आती है. ठीक है? बाकी सारी randomized control trial experimental है. Experimental design obviously experimental है. सर्वे रिसर्च ये भी एक्सपेरिमेंटल होती है. क्लियर? बट ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज एन नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, बिकॉज आप यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो, यू जस्ट ऑब्जर्व द डेटा. ओके.
What does reliability in research refers to? Reliability का मतलब क्या होता है, बताइए. Correct. It is option number B. The consistency of results over the time. Clear? अगर क्वेश्चन होता what is the meaning of validity, right? So option C would have been correct. Validity की definition option C है. Reliability की definition option number B. Consistency of results over time. How much consistency your test results are maintaining over the long period of time. Clear? We have test retest, we have split half, alternative form, iterator, so many types of reliability. Then, what is the purpose of using control group in experimental research? Very good question and important for the exam. कंट्रोल ग्रुप को हम लोग एक्सपेरिमेंट ग्रुप में क्यों यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल ग्रुप? Correct. To compare the effects of IV, right? If you want to check the impact of coffee on sleep, right? So one group you will give the coffee, check their sleep. Other group you will not give the coffee and then check their sleep. So one group you give intervention, that is experimental group or intervention group. Other one that is a control group which does not receive any kind of intervention. ठीक है, control group इसलिए बोलते हैं कुछ नहीं मिलता उनको. Clear? Okay. What type of research design is typically used to establish the relationship between two or more variables? बताइए क्या होगा इसका आंसर? Correct. It is option number B. Correlational design. Since यहाँ पे cause and effect की बात नहीं हुई है, so we will not go with A. It is only talking about relationship. So we'll go with option of B. Correlation design. The range of correlation is between -1 and +1. Clear? 0 means no correlation. -1 and +1 are extreme values, and minus and plus simply shows the direction of the movement. A increasing, B decreasing, that is negative correlation. A is increasing, B is also increasing, that is same direction movement, this is positive correlation. Clear? So range is -1 to +1. Then last question, what is the primary limitation of survey research? सर्वे रिसर्च की प्राइमरी लिमिटेशंस क्या है बताइए. करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. इट मे लीड टू बायस्ड रिजल्ट्स ड्यू टू सेल्फ रिपोर्टिंग नेचर ऑफ रिस्पॉन्सेस. क्लियर? सो दीज आर 20 क्वेश्चंस एंड डोंट वरी अगर आपको ये बहुत ईजी लग रहे हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, दे आर ईजी. क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है, यू मस्ट हैव सीन कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में फ्रॉम टॉपिक्स आई हैव टेकन सम वेरी हार्ड क्वेश्चंस. बट द प्रॉब्लम विद रिसर्च इज इफ यू डोंट हैव द बेस, इफ यू डोंट हैव द कंसेप्ट्स क्लियर्ड राइट फ्रॉम द हार्ड, सो प्रॉब्लम ये होगी कि इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग द रिसर्च MCQs ऑन अ वेरी मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल, यू कैन नेवर लर्न द रिसर्च, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड रिसर्च अगर पहले टाइम में आपको इतने हार्ड क्वेश्चंस मिल गए. सो दिस वॉज पर्पसफुली एन ईजी 20 क्वेश्चंस. यू विल गेट द आइडिया कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहे हैं. If you are facing problem even these kinds of questions, so you need to buckle up your preparation. It is only 1 month remaining, right? एक महीना भी नहीं बचा है पूरा पूरा. 13 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे. Will not be thinking कि नहीं एग्जाम तो 25 तक है, what if psychology end में पढ़े? No. We'll have the deadline of 13 March. 13 March तक आपकी complete preparation हो जानी चाहिए. And at this moment अगर आपको इतने questions नहीं solve हो पा रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, so you have to study really hard. Clear? So this was a game checker कि आप लोग किस लेवल पे अभी हो. अगर आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं तो यू आर गुड टू गो. अगर आपने को इनमें भी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रस्ट मी दीज आर द लाइक ABCDs ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी, राइट? इन अवर बैचेस विल बी सॉल्विंग लाइक मेनी मोर डिटेल्ड एंड हार्ड क्वेश्चंस, राइट? दिस वाज जस्ट फॉर द बेस एंड इंट्रोडक्शन की क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा रिसर्च के क्वेश्चंस किस डोमेन में पूछे जाते हैं. एंड दिस वाज जस्ट अ रिसर्च पार्ट. आई हैव नॉट स्टिल टेकन द स्टैटिस्टिक्स पार्ट. क्लियर? स्टैटिस्टिक्स के भी किसी और दिन रख लेंगे क्लास, ठीक है, ताकि आपको उसमें भी आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं. फॉर नाउ आई विल साइन ऑफ एंड अगेन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस MCQs, माय ऑनगोइंग बैच इज लाइव, दैट इज अ विजेता बैच. आप लोग CVT स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हो. देयर विल यू सी सेक्शन ऑफ CVT PG क्रैश कोर्स, राइट? देयर विल यू सी अ बैच ऑफ विजेता बैच. Its price is 1599 I guess, and in this you will get the complete access of research classes and statistics classes. तो जो भी इस classes में हुई हैं complete detail foundation से what is research वहाँ से शुरू किया है from the top notch level, जितना आपको CVT एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है वो क्लासेस आपको मिलेंगी along with this complete notes and PPTs
and you'll get the access of our ongoing live classes that is for the MCQ basis only, right? So we'll be solving 1500 plus questions, completing whole syllabus, and in that specifically we'll be solving 350 plus questions specifically on the research and statistics part. Clear? So you can join if you want, and see you soon in the next video. And जो भी विजेता बैच के बच्चे हैं, भागना ही कहीं भी, 10 मिनट में हम लोग की दूसरी क्लास शुरू हो रही है, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस साइकोलॉजी एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज.